Hello students and welcome to your own channel Be Mathaholic. Today in mathematics class 11th we are going to study about chapter 2 relations and functions, and I told you about relations. We had discussed relations in my previous video already. Now today I'm going to tell you about something about functions. Functions में हम क्या क्या पढ़ेंगे चलिए देखते हैं. We'll talk about domain, we'll talk about codomain, and of course range. Also we'll be studying about algebra of functions. So let's start the chapter. Now see what the definition of function says. A relation f from a set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. Now please remember that every element of in set A, okay? एलिमेंट सेट ए का जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी क्या होती है, एक यूनिक इमेज होती है सेट बी के एलिमेंट्स के साथ. लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट दीज टू. फॉर दिस आई एम गोइंग टू टेक दिस एंड रिप्रेजेंट इट थ्रू एरो डायग्राम. तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं एक फंक्शन को. हियर लेट अस टेक द टू सेट्स. हियर आई एम टेकिंग एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. नाउ आई विल रिप्रेजेंट दिस थ्रू एन एरो डायग्राम. लेट दिस बी सेट ए, लेट दिस बी सेट बी. Then here a function is defined through arrow diagram as f. Now suppose there are x elements in set A and y elements in set B. Then y is considered as an image of x under the function f. We can write this as y equals to f of x. यहाँ पर क्या कहलाएगा ये? Y is the image. Now what is this y? Y is actually the image of x under the function f. Okay, now it has to be unique. Please remember this. ये क्या होना चाहिए? यूनिक इमेज होना चाहिए. यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है डोमेन सेट के वो सारे एसोसिएट होना चाहिए को डोमेन एलिमेंट्स के. तो जहां पर जो एलिमेंट्स हमने रिलेशंस में बात की थी, सेट एज के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स जो कि कहलाएंगे डोमेन एलिमेंट्स. सेट बी जो कहलाएंगे सारे एलिमेंट्स वो कहलाएंगे कोडोमेन. And elements which are associated with x, जो भी सेट A के एलिमेंट्स जो B के एलिमेंट्स से एसोसिएटेड होंगे वो क्या कहलाएंगे? रेंज. इसीलिए हम क्या कहते हैं? रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. ऑलराइट, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जांपल ओवर हियर. ओके, इसीलिए हम ये वाला फंक्शन आप ध्यान रखिएगा, y शुड बी इक्वल टू f of x, y equal to fx हम कहते हैं. Okay, so let's understand this with an example here. Now suppose I am taking this as an example. I am taking this as यहाँ पर हम फिर से कंसिडर कर लेते हैं सेट A और सेट B defined under the function f. Now suppose I am taking few elements in set A as 1, 2, 3, 4, and here are certain elements in set B 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Now suppose 1 is associated with 6 and 2 is associated with 5. Similarly 3 is associated with 7 and 4 is associated with 8. Now remember, जो भी element set A में होंगे, every element should have an association or should have a unique image of elements of set B. Alright? जैसे यहाँ पर if element 9 is left, there is no problem, but there should not be any element which is left in set A. So we can write it in this manner that 6 is the image of 1. So we can write it as 6, f1 is 6. Similarly, we can write f2 as 5. Similarly, we can write f3 as 7 and f4 as 8. Or if you will make the ordered pairs of these functions, it will be like this, that 1 is associated with 6. Similarly, 2 is associated with 5. Then we have 3 with 7 and 4 with 8. Okay, that's why we say that whatever the first elements of these ordered pairs will be considered as domain elements. So domain of this will be 1, 2, 3 and 4. Similarly, range of this will be 6, 5, 7 and 8, and codomain of this will be codomain will be all the elements of set B will be considered as codomain. Here f is a function defined from A to B. Okay, so codomain will be all the elements of set B which are associated or which are not associated, all will be included in this. So we have 5, 6, 7, 8 and 9. ये सारे elements क्या हो जाएंगे?
कोडोमेन एलिमेंट्स कहलाएंगे. ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द फंक्शंस. यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे एलिमेंट्स की जो फंक्शंस है इनकी यूनिक इमेज यहाँ पर बनती है. ओके, अब इसको हम इस तरह से और समझ सकते हैं कि अगर आपका कोई भी फंक्शन यहाँ पर, सपोज आपके पास कोई भी फंक्शन है इस तरह से, जैसे मैंने कहा हम एरो डायग्राम से और इसको समझ सकते हैं. जैसे सपोज ये a है, ये b है, इट इज डिफाइंड with a function a to b. Now suppose here 1, 2, 3 elements are there and here it is 4, 5 and 6. Now if 1 is associated with 4, 1 cannot be associated with 5. Always remember that if here it is, if 2 is associated with 6, 3 is associated with 6, this should not be the case. Okay? Every element of domain should have a unique association with the elements of codomain. Means here if f1 is 4, f1 cannot be equal to 5. So this type of function will be a relation, but it will not be a function. Always remember this thing. Okay, so let's understand through certain examples here. Now I have taken one example here. Let n be the set of natural numbers and the relation r be defined on n. N is a set of natural numbers such that r equals to xy, y equals to 2x for all xy belongs to natural number. Now what is the domain, codomain and range of R? Is this relation a function? Let us understand through an example here. आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो relation defined है, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ही set builder form में दिया गया है. ठीक है, अब this relation is this a function? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, let us see what is x. X is the elements lying in the domain elements. So y is the range. So x and y belongs to n. So let's see what all ordered pairs we'll have here. So the function defined, or you can say relation यहाँ पर क्या है, y equals to 2x. अब यहाँ पर बच्चों जब हम pairs बनाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जब एक आप यहाँ पर ordered pairs बनाओगे तो x अगर मैंने 1 रखा तो y will be 2. Similarly if I put x as 2, y will be 4. If I put x as 3, y will be 6 and so on. Right? So when I am going to substitute the values here, I am getting different values of y over here. So through arrow diagram also if we check out, we will find that all the elements which are of x, that is all the first elements will be all will be a set of natural numbers. So domain of f will be all set of natural numbers. Okay. Similarly, if we are associating, now let's find out what is the range. Range is the image of all the elements of domain. अब range यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 2, 4, 6, 8, 10 and so on. So range will be all set of even numbers. Okay, what will be range? Range will be multiples of 2, that is set of even numbers. And what will be codomain? Codomain will be all set of natural numbers. As you can see, through arrow diagram also, if I am going to explain it to you, आप arrow diagram से भी देखेंगे, तो arrow diagram से आप कैसे पता करेंगे यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आप इस तरह से देखो कि अगर ये set of natural number यहाँ पर defined है 1, 2, 3 up till infinity, similarly this is also 1, 2, 3 up till infinity, then if I am going to associate 1, what will be y? Y will be 2 multiple of x, that is 2. 1 is associated with 2, similarly 2 is associated with 4 and 3 is associated with 6, like this. So all numbers which will be the image in set B will be all set of even numbers. So जो भी B के elements हैं जो एक unique image बना रहे हैं, जो associated है elements of A के, वो सारे क्या कहलाएंगे, range कहलाएंगे. Okay, so codomain will be natural number. तो बचे हुए जितने numbers हैं, those all will be considered as range or codomain you can say. So this is also a set of natural numbers. So let's move to another example now. Okay, let's see this. Examine each of the following relations given below. अच्छा, we had discussed. Now is this relation a function? हमने इसकी बात तो की ही नहीं. चलो देखते हैं. Is this relation a function? क्या ये relation function होगा? Yes, definitely this relation will be a function as every element of this set is uniquely associated with the elements of set B. So this type of relation is definitely a function. Now let's move to the next example. Examine each of the following relations given below and state in each case giving reasons whether it is a function or not. Now let's understand this. Okay, I have taken 3 different examples over here.
अब यहाँ पर हम पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं. फर्स्ट वन इफ आई टेक, इट विल बी r इक्वल्स टू 2 1 3 1 एंड 4 2. ओके, नाउ सी एवरी एलिमेंट, आपको फर्स्ट एलिमेंट्स चेक करना है कि सबकी अलग सेम इमेज है या अलग अलग इमेज है. जैसे मैंने कहा, सपोज हियर f2 इज 1. Similarly, if I am putting this f3, here it is also 1 and f4 is 2. Now, what you have to cross check is that these elements should not be same. Okay? ये जो elements है y के elements, जो range दिखाती है आपको, ये same हो सकते हैं, कोई problem नहीं है. पर ये जो elements हैं, ये सारे क्या होने चाहिए? Different होने चाहिए. इनकी सबकी image same हो सकती है, पर same element की, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती. ओके, सो इफ दिस इज द एसोसिएशन ओवर हियर, वी कैन वेरी वेल से दैट यस दिस इज अ फंक्शन. ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड वन ओवर हियर. नाउ व्हाट डज दिस पार्ट सेज हियर? अगर हम यहाँ पर पेयरिंग करें तो यहाँ पर क्या होगा? f2 is 2, देन हियर अगेन f2 is 4. ओके, अगेन ये तो हमको यहीं से दिख रहा है. f3 is 3 and f4 is 4. ओके, नाउ व्हाट डू वी सी हियर? मैंने क्या बताया? ये जो एलिमेंट है ये सेम नहीं होना चाहिए, और सेम होता है तो उसकी इमेज भी सेम होनी चाहिए. ये इमेज है, ये प्री इमेज है. ओके, सो f2 is 2, then f2 cannot be 4. This cannot be there. So such type of function is not a function. It is a relation. It is such type of relation is not a function. ये क्या है? फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी सेम ये एलिमेंट है, इसकी दो इमेजेस बन रही हैं, जो कि गलत है. डेफिनेशन के हिसाब से उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए. ओके, लेट्स चेक अबाउट द थर्ड वन. व्हाट डू वी सी इन द थर्ड वन चिल्ड्रन? 1, ओके, 2, 3, 4, 5 एंड 6. यहाँ पर एवरी एलिमेंट इज सेपरेट, सो वी कैन से f1 is 2. Similarly, we have f2 is 3. Similarly, f3 is 4. f4 is 5 and f5 is 6. Similarly, we have f6 is 7. So every element you can say is having a separate and unique image over here. No element here is repeating over here. So again, this type of relation is a function. Getting or not? I think you've got that. So you understood it very well. Let's move to the next one now. Alright, now we have this. Find the domain and range of the following real functions. Now children, please remember that whatever functions we are going to discuss, all functions will be real valued functions. Okay. In this, what type of functions are real functions? Those functions whose domain and codomain are real numbers, or you can say the range is also a subset of real numbers. So such type of functions are called as real valued functions. So यहाँ पर let us understand these two functions. Let us discuss this function. So let's check for the first part. Here we have fx equal to minus of mod x. Okay. Now what do we call this? Now fx equal to minus of mod x. Please remember we have this modulus function. Okay. A modulus function में क्या होता है? Whatever value we are going to assign to x, it will come out positive. Be it negative, be it positive. Modulus लगते ही वो क्या हो जाता है? Positive बन के आएगी. Okay, so for such type of function we don't have a rational function or any function which is not in root. We will discuss this function also. पर ये क्या है? Simple function है. तो इसमें domain क्या हो जाएगा? Domain will be all set of real numbers. Okay, this is clear now. Now let's talk about range. Range will be what? So let's discuss about this modulus of x. अब हम जानते हैं mod x is always defined for positive value, that is mod x is always greater than or equal to 0. Now there is a rule of inequality which says that when minus is multiplied both the sides, remember this is a rule of inequality which says that when minus is multiplied both the sides, then the inequality symbol reverses. Okay, so if here I am going to multiply with minus, then this inequality symbol gets reverses. Okay, so this is minus mod x is less than 0. Now what is this minus mod x? This is nothing but y. Alright, what is this? ये हमारा क्या है? ये है हमारा y. So y is less than equal to 0. Now what is this y? Y is the range. Range है ये यहाँ पर. तो हम इसको क्या कहेंगे? Range of f will be what? Range of f will belong to minus infinity से 0. This is with a
closed bracket. y has to be less than, यहाँ पर क्या कंडीशन आ रही है, y is less than or equal to 0, मतलब 0 से सारी नेगेटिव वैल्यूज जो है वो लेगा y क्या है यहाँ पर, x is an independent variable and whatever value we assign to x, y takes that value. Always remember this. So यहाँ पर आपने देखा मॉड्यूलस फंक्शन जो है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रखेंगे बाहर आके वो पॉजिटिव ही मिलेगा, पर बाहर यहाँ पर क्या है, माइनस साइन है. सो अल्टीमेटली y हमको क्या मिलेगा, सारे नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगे. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. Let's move to the second part now. Now this is a bit different question. Here fx is equal to 9 minus x square. Okay. Remember children, we are talking about real functions. Okay. And real functions में root के अंदर हमको positive value ही हमेशा चाहिए. Negative जो होगी वो complex function हो जाएगी. हमको function defined नहीं होगा when we talk about negative values inside the root. So all positive values should come here. तो हम यहाँ पर किस तरह से बात करेंगे, डोमेन निकालते हैं. सबसे पहले we'll talk about domain of this function. So here we should know this that 9 minus x square should always be greater than or equal to 0. ये पूरी टर्म क्या है, पॉजिटिव होनी चाहिए. ओके, और we can say that here 9 is greater than or equal to x square or x is less than or equal to plus minus 3, or you can say it like this that x is greater than or equal to minus 3 and less than or equal to 3. So what will be the domain of this function children? Domain will lie between minus 3 to 3. Remember this that जब भी हम x की वैल्यू माइनस 3 और 3 के बीच में जब भी रखेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी. बिकॉज अगर हमने 3.1 या हायर वैल्यूज रख दी या माइनस में हायर वैल्यूज रख दी, फर्क कुछ नहीं पड़ना बिकॉज दिस इज एक्स स्क्वायर. ओके, इवन इफ वी कीप नेगेटिव वैल्यूज दिस विल नॉट बी इफेक्टिंग दिस टर्म. But here, if I keep putting 3.1 or higher values other than 3, greater than 3, then this term will become negative and we do not want this. So, the domain of this function will be range from minus 3 to 3. Now, let's talk about the range of this. For finding out the range, let us take this as y equals to root of 9 minus x square. Okay. अब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर जब रेंज निकालेंगे, सो रेंज के लिए अब क्या करेंगे, वी हैव y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज x इक्वल टू रूट ऑफ 9 minus y square. Now again we have the function in this form which was already there given here in this form. Okay, that means what, in 9 minus y square means y should always lie between minus 3 to 3. But remember y cannot be negative. हम देखेंगे यहाँ पर कि जो x की वैल्यू हम जो भी रखेंगे y हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव. So you can say this, but y has to be greater than or equal to 0. So range of this function will be lying between 0 to 3. This is what the range of this function is. I hope you have understood this function. So we'll talk about more of these type of functions and these type of some questions. The difficulty level will be higher for those. So let's talk about another question here. Find the range of each of the following functions. अब ये वाला क्या कह रहा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, let us see here. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर हमने लिया है कि यहाँ पर आपको निकालना है find the range of each of the following question. Here domain is already given, right? यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू ऑलवेज डिफाइंड है यहाँ पर. अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर डोमेन दिया हुआ है और रेंज निकालना है. ओके बच्चों, तो चलो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे. तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, सो fx इक्वल्स टू 2 माइनस 3x. ओके, now x belongs to R. Now this is a dark R. You can see ये रेंज दी हुई है, आपको डोमेन दिया हुआ है यहाँ पर. So domain of this function will be all set of real numbers. तो वो हमको फाइंड ही नहीं करना है. We have to find out the range. But यहाँ पर there is a condition given that x is greater than 0. So let's find out the range with this with condition given to us. Here you can see x is greater than 0. Okay. Now as I said, जब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी सिंबल क्या होता है, रिवर्स हो जाता है. सो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज आई कैन राइट दिस एज minus 3x is less than 0.
Okay, this was greater than 0, minus 3x is less than 0. ना और ये 2 है, मैंने क्या किया, दोनों जगह 2 को ऐड कर दिया. Okay, adding to both the sides, subtracting to both the sides doesn't affect the inequality symbol, but when we are multiplying or dividing the term with a negative 1, then the inequality symbol gets reversed. Now what is this, children? This is y. This is nothing but y. So ये क्या है? Y is less than 2. So what is this y? Y is the range. So range of this function will be less than 2. 2 यहाँ पर देखो inequality में less than equal to नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से 2, वो भी ओपन इंटरवल में. ठीक है. So यहाँ पर इस तरह से इसका रेंज होगा. So remember this, जब ये inequality symbol less than हो या greater than हो तो open interval लगता है. Less than equal to हो या greater than equal to हो तो closed bracket लगेगा. Okay, so like this we are representing this in the form of intervals like this. I hope you have understood this question. Okay, let's talk about question number 2. That is fx equal to x square plus 2. X is a real number. Again, x is a real number. Okay. So, यहाँ पर हम बात करेंगे फिर से रियल नंबर की. तो सेकंड क्वेश्चन को किस तरह से डिफाइन करेंगे यहाँ पर. So, y equals to fx equals to x square plus 2. Now this is again, as you can see, this is what? This is x square, means every negative or positive number will be always greater than equal to 0. So, to find out the range, what we have to do is, we know that x square is always greater than or equal to 0. We all know this, positive number देता है ये हमेशा. Okay, so adding to both the sides, what do we have? That this is y again. So y is greater than or equal to 2. So range of this function will be what? Greater than or equal to 2 means 2 closed bracket में आएगा, 2 to infinity. This is what the range of this function will be. I hope the examples and the question discussed in this video are clear to every one of you. And we'll see and we'll talk about graphs of functions in the next video with some more examples of such type of questions discussing the domain and range of different types of functions. So, goodbye for now.